करेंगे तो ये स्ट्रीम तो करना शुरू कर देगा, लेकिन इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा अभी तक। तो यहाँ पे भी हमें This strategy can help you capture the biggest breakouts before they happen, like this, this. देख लेते हैं यहाँ पे कहीं नहीं आ गया, ठीक है, सॉरी माय बैड। वो जब आप शेड्यूल करेंगे वहां पर लाइव बटन पे क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जैसे भी हमारा स्क्रीन है इस तरीके से मैं कॉर्नर में दिख रहा हूँ। सारी चीजें आप लोग को एज इट इज दिखेगी। अगर मान लो कि मैं ये ओपन कर लेता हूँ जो आप लोग को थोड़ी देर पहले समझा रहा था, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो आएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आप लोग को दिख रही है, ठीक है। और ये अब आपको स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे मेरी वीडियो नहीं चल रही है, लेकिन जब आप लाइव स्ट्रीम जाके देखोगे तो यहाँ पे आपकी वीडियो होगी, ठीक है। लाइव स्ट्रीम हो सकता है आपका 4 से 5 सेकंड पीछे हो बेस्ड ऑन द इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पे देखिए ये हम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक्चुअली में जब अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ स्ट्रीमिंग को। अगर मान लीजिए मुझे बंद करना है तो मैं यहाँ पे स्टॉप स्ट्रीमिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं स्टॉप स्ट्रीमिंग पे क्लिक करूंगा वहां पे भी चीजें स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, जब मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था तो होगा अभी तक। तो यहाँ पे भी हमें देख लेते हैं, यहाँ पे कहीं नहीं आ गया, ठीक है, सॉरी माय बैड। वो जब आप शेड्यूल करेंगे वहां पे लाइव बटन पे क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जैसे भी हमारा स्क्रीन है इस तरीके से मैं कॉर्नर में दिख रहा हूँ। सारी चीजें आप लोग को एज इट इज दिखेगी। अगर मान लो कि मैं ये ओपन कर लेता हूँ जो आप लोग को थोड़ी देर पहले समझा रहा था, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो आएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी नहीं आ गया, ठीक है, सॉरी हो चुका है। यहाँ पे जैसे भी हमारा स्क्रीन है इस तरीके से मैं कॉर्नर में दिख रहा हूँ। सारी चीजें आप लोग को एज इट इज दिखेगी। अगर मान लो कि मैं ये ओपन कर लेता हूँ जो आप लोग को थोड़ी देर पहले समझा रहा था, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो आएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आप लोग को दिख रही है, ठीक है। और ये अब आपको स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं चल रही है, लेकिन जब आप लाइव स्ट्रीम जाके देखोगे तो ठीक है। लाइव स्ट्रीम हो सकता है आपका 4 से 5 सेकंड पीछे हो बेस्ड ऑन द इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पे देखिए ये हम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक्चुअली में जब अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ स्ट्रीमिंग को। अगर मान लीजिए मुझे बंद करना है तो मैं यहाँ पे स्टॉप स्ट्रीमिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं स्टॉप स्ट्रीमिंग पे क्लिक करूंगा वहां पे भी चीजें स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, जब मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था तो आप लोगों को दिख रहा था कि ये वाला जो वीडियो है वो दिख नहीं रहा था स्क्रीन पे, लेकिन वो एक्चुअल में हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में जा रहा होता है। तो ऑब्वियसली यही होता है कि अगर आपने वीडियो कैप्चर डिवाइस ऑन कर रखी है तो जितना भी पोर्शन आपको ये ले रहा है स्क्रीन, उतने पोर्शन में वो लाइव स्ट्रीमिंग में दिखेगा। लाइव स्ट्रीमिंग पे चल के देखते हैं, यहाँ पे हो चुका है खत्म। इसको हम एंड स्ट्रीम करना पड़ेगा और इसको हम कर देते हैं एंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को ये जो अनलिस्टेड वाली वीडियो है ना उसकी लिंक भी आपको यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए 1.5 मिनट का वीडियो हो गया। हम इसको एडिट नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। और ये जो वीडियो है इसका एक लिंक जनरेट होगा, क्योंकि अनलिस्टेड है तो अभी लिंक तो जनरेट होगा, राइट। तो वो लिंक दे दूंगा तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि जब हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो हमारा कैसा फुटेज आ रहा था, कैसा आवाज आ रहा था, कैसा वीडियो आ रहा था। सारी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने लाइव स्ट्रीमिंग करना सीख लिया, हमने ओबीएस की थोड़ी सी ट्रिक सीखी। अगर आपको ओबीएस ये ओपन कर लेता हूँ जो आप लोग को थोड़ी देर पहले समझा जाके देखोगे तो यहाँ पे एक चीज है, जब मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था तो आप लोग को दिख रहा था कि ये वाला जो वीडियो है वो दिख कर देता हूँ। अब जैसे मैं स्टॉप स्ट्रीमिंग पे क्लिक करूंगा वहां पे भी चीजें स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, जब मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था तो आप लोग को दिख रहा था कि ये वाला जो वीडियो है वो दिख नहीं रहा था स्क्रीन पे, लेकिन वो एक्चुअल में हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में जा रहा होता है। तो ऑब्वियसली यही होता है कि अगर आपने वीडियो कैप्चर डिवाइस ऑन कर रखी है तो जितना भी पोर्शन आपको ये ले रहा है स्क्रीन, उतने पोर्शन वो लाइव स्ट्रीमिंग में दिखेगा, ठीक है। तो जैसे अभी हमारा लाइव स्ट्रीमिंग पे चल के देखते हैं, यहाँ पे हो चुका है खत्म। इसको हम एंड स्ट्रीम करना पड़ेगा और इसको हम कर देते हैं एंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को ये जो अनलिस्टेड वाली वीडियो है ना उसकी लिंक भी आपको यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए
1.5 मिनट का वीडियो हो गया। हम इसको एडिट नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। और ये जो वीडियो है इसका एक लिंक जनरेट होगा, क्योंकि अनलिस्टेड है तब भी लिंक तो जनरेट होगा, राइट। तो वो लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि जब हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो हमारा হ্যালো এভরিওয়ান, এখন আমি লাইভ স্ট্রিম করব। তো লাইভ স্ট্রিম করছি, আপনারা আমার স্ক্রিনটি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো এভরিওয়ান, এখন আমি লাইভ স্ট্রিম করব। তো আপনারা কি আমার লাইভ স্ট্রিম শুনতে পাচ্ছেন? সাউন্ড প্রপার আসছে? তো অ্যাকনোলেজ করবেন সাউন্ড প্রপার আসছে কি। এটা আমার ফার্স্ট টাইম লাইভ স্ট্রিম। হ্যালো 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 হ্যালো। ওকে, ইউটিউব এখানে উঠেছে, ভিডিও পেমেন্ট screen status 4. Screen settings. পাবলিক করে দিলে কি হবে চিন্তা করা যাচ্ছে। Interest rates. So Jerome Powell turns around and lowers the interest rates and lowers the interest rates, and pretty soon we've got interest rates going from 250 basis points, like overnight rates, to zero. What happens to the stock market? And this is the most perverse thing imaginable. By the summer of 2020, all of the stocks have recovered. There's all we had a crisis, but we solved it by taking the interest rate to zero. We printed money. And the stocks recovered. Amazon's recovered, Apple's recovered, Disney is trading
higher. People are basically taking Disney up to double, and they're trading it based upon forward expectations of Disney streaming video revenue year 2024. And I'm watching this, and this was what happened in 2020 I would characterize as a bifurcation of Main Street and Wall Street. What you saw was Main Street was destroyed by these policies. Right? Main Street got shut down. The private manufacturer, the person that works with their hands, the guy that shows up, the small business, the mid-sized business. This is the Trump constituency, by the way. These people get destroyed. And they're like, okay, it's illegal for you to open your gym. You're going to jail if you go to work. Okay? And then Wall Street was, you got guys running $5 billion equity investment funds living in New York and the Hamptons. They had the best year of their life, Jordan. 2020 was the best year in 30 years for these investors. They're making, all you had to do was be holding the stocks or playing the market. When interest rates go to zero, the PE of any company in generates cash goes, it doubles, it triples. The cap rates on real estate double. So the perverse irony is you own a building, no one's in it, the value of the building doubles in 4 weeks. You're owning a company, all the customers are being bankrupted, the value of the company doubles. So what happened was the government printed money, we had hyperinflation, not in consumer products, not in producer products. We had hyperinflation in financial assets. That hyperinflation meant that the stock market rallied, real estate rallied. If you owned a portfolio of real estate or portfolio of stock, you got rich. And the thought that I had, which is this investment manager sitting on his floaty at his house in the Hamptons is having the best year of his life, and I'm having the worst year of my life. He's not working at all. He's literally not working at all. He's watching television, getting rich, taking high fives. And I'm watching all these people I care about wiped out, destroyed, jailed, abused, bankrupted, fired, stripped of all hope. And then I have this $500 million asset, and the interest rates go to zero. And Jerome Powell goes on television, and he gives a speech, and these are his words. We've taken interest rates to zero. I'm not even thinking about raising interest rates to the year 2024. The distortion wasn't subtle, it was blinding. While the real economy suffocated, the paper economy inflated at levels never seen before. And this wasn't just a bad policy decision, it was a clarifying moment, one that forced people to ask the most basic, but also the most dangerous and loaded question in modern finance. What is money? For Saylor, the question wasn't academic. He had $500 million on the line. He could no longer trust the traditional source of value. So he started looking deeper. What asset can store economic energy across time without rotting? That search led him to revelation. For many of us, it's the same turning point. So I was there, and I thought, what can you buy? Can I buy real estate? And the answer is real estate just doubled in value over a few years because Jerome jacked the price of interest to zero. So that's not good. Can I buy a portfolio of stocks? They just went to an all-time high because we jacked the interest to zero. That's no good. Can I buy a portfolio of collectible art? Oh yeah, good luck. Like, how do I find $500 million of Picassos and Monets attractively priced? You're looking at a guy, after 30 years in business and an engineering education, reasonably educated but not classically trained economist, not an Austrian economist. I am struggling with the time-honored question, what is money? I need a liquid, fungible asset which will store my economic energy for an indefinite period of time. That is, and so
what is money? I'm looking for money. And eventually I get to gold. And I'm thinking, should I buy $500 million in gold? And my attorney, he looks at me and goes, Mike, I remember when gold was $800. And Stop making embarrassing writing mistakes. Quillbot for Chrome instantly eliminates grammar errors. Your writing is always flawless. And the best part? क्या बिटकॉइन का प्राइस $95,000 की तरफ जा रहा है? इस सवाल का जवाब आपको कच्चे तेल से मिलेगा। कच्चा तेल जिसका दाम कुछ तेजी से बढ़ने लगा जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई। We continue to track the latest as far as the Iran and Israel escalating tensions on Iran raiding missiles at each other for the third consecutive day. इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ना सिर्फ डर से पर्दा उठाऊंगा, बट ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन के प्राइस का हम जुलाई और जून में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो वीडियो बड़ी फास्ट सी होगी, तेल है कच्चा, बट आपके साथ मेरा क्रिप्टो का रिश्ता बहुत ही पक्का है, इसलिए आप इसको ऐसे कर लें और यहाँ जो नीचे सब्सक्राइबर का बटन है वो सब्सक्राइबर के बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह के अद्भुत एनालिसिस आपसे मिस ना हो। मैंने यहाँ पर हर जंग और उसके बाद WTI यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइस में क्या इजाफा हुआ था और उसका बिटकॉइन पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसका एनालिसिस मैंने आपके लिए किया है। सबसे बड़ी जंग जो अभी अपने हाल फिलहाल देखी है वो रशिया यूक्रेन की वॉर है, जिसके तुरंत बाद तो अगर आप देखेंगे तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर सबसे तगड़ा प्रहार इस तारीख किया था करीब 25 फरवरी को, जो कि चाइना का नेशनल डे भी था, उसका इंतजार किया था। उसकी भनक से कि रशिया तगड़ा अटैक करने वाली है उसकी जानकारी जो काफी पहले से थी। WTI यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ से तेजी से बढ़ने लगा था। इस पूरे साल में जनवरी और फरवरी के महीने में क्रूड ऑयल बढ़ता रहा था, पर उसमें एक दो हफ्ते का जबरदस्त इजाफा आया जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आपको यहाँ पर हल्की सी गिरावट भी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि याद रखिए फ्यूचर्स हमेशा एक्सपेक्टेशंस पे चलते हैं, रूमर्स पे चलते हैं। जब ये जंग हुई उस जंग के 2-3 हफ्ते बाद सबको समझ में आ गया था ये जंग उतनी डेवास्टेटिंग नहीं है, ये जंग में यूक्रेन बराबर खड़ा होकर लड़ने वाला है। इसी के चलते क्रूड ऑयल में थोड़ा सा रिलीफ आया, बट अगर हमें मेजर करना हो जब से ये पैनिक स्टार्ट हुआ उसके पीक तक क्रूड ऑयल ने करीब 108% यानी कि $60 से $130 का सफर तय किया। जैसे जंग के असली परिणाम दिखने लगे, यानी कि करीब अप्रैल आते आते सप्लाई चेन में बड़ी डिस्रप्शन हुई,
आपकी लग्जरी कारें डिले आने लगी, जो युद्ध पोत थे उनके चलते जो मालवाहक विमानों का आवागमन रुक गया और उसके कारण से तेल फिर से उठा और $120 तक चला गया। ये वो समय था जब यहाँ पर नाटो और यूएसए ने इंटरवीन किया। यूएसए ने यूक्रेन को सप्लाई प्रोवाइड करनी शुरू करी और ये लगा कि अब जो है ये जंग रुक सकती है, क्योंकि युद्ध की कूटनीतियों की बात होने लगी, इसलिए कच्चा तेल अगले कुछ समय नीचे गया। और अच्छी बात यह है कि भले इसे बहुत सारा समय लगा, बट फ्रॉम द टॉप एक साल के अंदर वो करीब 48% गिरा। बट एक साल का मतलब है करीब करीब 52 हफ्ते, और यहाँ पर करीब करीब 2 साल के अंदर कच्चा तेल घूमकर वहीं वापस आ गया। बट आप जानना चाहेंगे इस दौरान बिटकॉइन को क्या हुआ? तो यहाँ पर हमने फीचर लगाया है। सबसे पहले तो जो लोग 4 ईयर साइकिल में विश्वास करते हैं और जिनको लगता है कि नवंबर 2021 में बिटकॉइन सडनली क्यों गिरने लगा, बेयर मार्केट क्यों शुरू हो गई, यकीन मानिए अगर यूक्रेन वॉर नहीं होती तो ये बिटकॉइन की महारैली चलती रहती। बिटकॉइन की इंडस्ट्रियल अडॉप्शन जस्ट शुरू ही हुई थी, और अब मैं आपको इस विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर उस इंडस्ट्रियल अडॉप्शन के चलते बिटकॉइन $70,000 जा सकता है, जहां पर सिर्फ माइक्रोस्ट्रैटेजी टेस्ला कंपनियां ही बिटकॉइन रिजर्व करती थी। इस बार आप मुझे बताइए कि बिटकॉइन $2-2.5 लाख क्यों नहीं जाना चाहिए? उसमें डिले होता है, क्योंकि उस समय भी अगर यूक्रेन रशिया की जंग सिर्फ फरवरी मार्च में रुक जाती तो बिटकॉइन एक और छलांग मारता, क्योंकि बाजार में पैसा बहुत ज्यादा था। दोस्तों हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जहां पर क्रूड ऑयल का बॉटम जो है नवंबर 2021 में हुआ, इसी के समानांतर बिटकॉइन का सीजन टॉप भी नवंबर 2021 में हुआ। कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का बॉटम रहना, क्रूड ऑयल का लिमिट में रहना बिटकॉइन की प्राइस को काफी हेल्प करता है। और जैसे ही क्रूड की टेंशन स्टार्ट हुई, जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हुए, बिटकॉइन ने ऐसी पलटी मारी कि बिटकॉइन ने कभी घर वापसी नहीं की। जो ये $130 का क्रूड ऑयल गया था, इस दिन बिटकॉइन की प्राइस, यहाँ पर मैं आपको छोटी सी माफी चाहता हूँ, जो मैं आपको राइट साइड पे चार्ट दिखा रहा हूँ आपके लिए, यह है सबसे बड़ी जंग अभी हमारे हाल तेल है कच्चा। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ना सिर्फ डर से पर्दा उठाऊंगा, each other for the इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ना सिर्फ डर से पर्दा उठाऊंगा, बट ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन के प्राइस का हम जुलाई और जून में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो वीडियो बड़ी फास्ट ही होगी। तेल है कच्चा, बट आपके साथ मेरा क्रिप्टो का रिश्ता बहुत ही पक्का है, इसलिए आप इसको ऐसे कर लें और यहाँ जो नीचे सब्सक्राइबर्स का बटन है वो सब्सक्राइबर के बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस तरह के अद्भुत एनालिसिस आपसे मिस ना हो। मैंने यहाँ पर हर जंग और उसके बाद WTI यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइस में क्या इजाफा हुआ था और उसका बिटकॉइन पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसका एनालिसिस मैंने आपके लिए किया है। सबसे बड़ी जंग जो हमने हाल फिलहाल में देखी है वो रशिया यूक्रेन की वॉर है, जिसके तुरंत बाद तो अगर आप देखेंगे तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर सबसे तगड़ा प्रहार इस तारीख किया था, करीब करीब 25 फरवरी को, जो कि चाइना का नेशनल डे भी था, उसने उसका इंतजार किया था। उसकी भनक से कि रशिया तगड़ा अटैक करने वाली है, उसकी जानकारी जो है काफी पहले से थी। WTI यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ से तेजी से बढ़ने लगा था। इस पूरे साल में जनवरी और फरवरी के महीने में क्रूड ऑयल बढ़ता रहा था, पर उसमें 1-2 हफ्ते का जबरदस्त इजाफा आया जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आपको यहाँ पर हल्की सी गिरावट भी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि याद रखिए फ्यूचर्स हमेशा एक्सपेक्टेशंस में चलते हैं, रूमर्स में चलते हैं। जब ये जंग हुई, उस जंग के 2-3 हफ्ते बाद सबको समझ में आ गया था ये जंग उतनी डेवास्टेटिंग नहीं है, ये जंग में यूक्रेन बराबर खड़ा होकर लड़ने वाला है।
इसी के चलते क्रूड ऑयल में थोड़ा सा रिलीफ आया। बट अगर हमें मेजर करना हो जब से ये पैनिक स्टार्ट हुआ उसके पीक तक क्रूड ऑयल ने करीब करीब 108% यानी कि $60 से $130 का सफर तय किया। जैसे जंग के असली परिणाम दिखने लगे यानी कि करीब करीब अप्रैल आते आते सप्लाई चेन में बड़ी डिस्ट्रप्शन हुई, आपकी लग्जरी कारें डीले आने लगी, जो युद्ध पोत थे उनके चलते जो मालवाहक विमानों का आवागमन रुक गया और उसके कारण से तेल फिर से उठा और 120 डॉलर तक चला गया। ये वो समय था जब यहाँ पर नाटो और यूएसए ने इंटरवीन किया। यूएसए ने यूक्रेन को सप्लाई प्रोवाइड करनी शुरू करी और ये लगा कि अब जो है ये जंग रुक सकती है क्योंकि युद्ध की कूटनीतियों की बात होने लगी, इसलिए कच्चा तेल अगले कुछ समय नीचे गया और अच्छी बात है कि भले से बहुत सारा समय लगा बट फ्रॉम द टॉप एक साल के अंदर वो करीब 48% गिरा। बट एक साल का मतलब है करीब करीब 52 हफ्ते और यहाँ पर करीब करीब 2 साल के अंदर कच्चा तेल घूमकर वही वापस आ गया। बट आप जानना चाहेंगे कि बिटकॉइन को क्या हुआ, तो यहाँ पर हमने फीते लगाए हैं कच्चा तेल का दाम कुछ तेजी से बढ़ने लगा जब से ईरान और इजराइल We continue to track the latest as far as Iran and Israel escalating tensions on Iran are raiding missiles at each other for the third consecutive day. अरे वाह, वीडियो के माध्यम से मैं আমার চ্যানেল দেখতে পাচ্ছ কি দেখো তো। पर्दा उठाऊंगा बट हाँ ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन देखो प्राइस देख का हम जुलाई এত ঘন্টা ধরে क्या एक्सपेक्टेशन কাজ रख सकते করে हैं। দেখি वीडियो কাজ बड़ी হলো फास्ट তো, होगी, 2:10 হয়ে तेल গেছে। है कच्चा बट आपके साथ मेरा क्रिप्टो का रिश्ता बहुत ही पक्का है, इसीलिए চলছে কি आप দেখো। इसको ऐसे कर लें और यहाँ जो नीचे सब्सक्राइबर्स का बटन है उस सब्सक्राइबर के बटन को दबा दें আমার और চ্যানেলের साथ में নাম बेल জানো आइकन না, को दबा दें ताकि সাবস্ক্রাইবার इसका করা हर নেই कोई তোমার? एनालिसिस आपसे मिस ना हो। मैंने यहाँ पर हर एक হ্যাঁ जंग और उसके बाद WTI यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइस में क्या इजाफा हुआ था और उसका बिटकॉइन पर क्या प्रभाव पड़ा था इसका एनालिसिस मैंने आपके लिए किया है। सबसे बड़ी जंग जो अभी हमने সেটা हाल फिलहाल में সাবস্ক্রাইব देखी है করা वो আছে रशिया তো। यूक्रेन की वॉर है, जिसके तुरंत बाद तो अगर आप देखेंगे तो रशिया ने ও यूक्रेन के তুমি ऊपर सबसे সব করে तगड़ा রেখেছো प्रहार কি? 23 तारीख किया था, करीब करीब 25 फरवरी को, হ্যাঁ जो कि चाइना का नेशनल डे भी था, उसने उसका আচ্ছা इंतजार किया था। उसकी भनक से कि रशिया तगड़ा अटैक करने वाली है उसकी जानकारी जो है काफी पहले से थी। WTI यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस यहाँ से तेजी से बढ़ने लगा था। इस पूरे साल में जनवरी और फरवरी के महीने में क्रूड ऑयल बढ़ता रहा था, बट उसमें 1-2 हफ्ते का जबरदस्त इजाफा आया जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आपको यहाँ पर हल्की सी ওই রে गिरावट भी दिखाई दे আসছে रही होगी কোথায়? क्योंकि याद रखिए फ्यूचर्स हमेशा एक्सपेक्टेशंस पे चलते हैं, रूमर्स पे चलते हैं। जब ये जंग हुई उस जंग के 2-3 हफ्ते बाद सबको समझ में आ गया था ये जंग उतनी ভাই চলছে डेवास्टेटिंग না नहीं ঠিক है, করে। ये जंग में यूक्रेन बराबर खड़ा होकर लड़ने वाला है। इसी के লাইভে चलते যাবে। क्रूड ऑयल में थोड़ा सा रिलीफ आया। बट अगर हमें मेजर करना हो जब से ये पैनिक स्टार्ट हुआ उसके पीक तक क्रूड ऑयल ने करीब करीब 108% यानी कि $60 से $130 का सफर तय किया। जैसे ही जंग के असली परिणाम दिखने लगे यानी कि करीब करीब अप्रैल आते आते सप्लाई चेन में बड़ी डिस्ट्रप्शन हुई, आपकी लग्जरी कारें डीले आने लगी, जो युद्ध पोत थे उनके चलते जो मालवाहक विमानों का आवागमन रुक गया और उसके कारण से तेल फिर से उठा और ওই রে। $120 तक चला गया। ये वो समय था जब यहाँ पर नाटो और यूएसए ने इंटरवीन किया। আমার চ্যানেলতে यूएसए এ ने করো না কো দেখো यूक्रेन না। को सप्लाई प्रोवाइड करनी शुरू करी और ये लगा कि अब जो है ये जंग रुक सकती है क्योंकि युद्ध की कूटनीतियों की बात भी होने लगी, इसलिए कच्चा तेल সাবস্ক্রাইব अगले করে कुछ রাখো समय নিবে। नीचे गया। और তাহলে अच्छी ভিডিও बात ছাড়ি है নাই कि ছেড়ে भले তো से बहुत সাবস্ক্রাইব सारा করে समय রাখো। लगा बट फ्रॉम द टॉप एक साल के अंदर अंदर वो करीब 48% गिरा। बट एक साल का मतलब है करीब करीब 52 हफ्ते और यहाँ पर करीब करीब 2 साल के अंदर कच्चा तेल घूमकर वहीं वापस आ गया। बट आप जानना चाहेंगे इस दौरान बिटकॉइन को क्या हुआ, तो यहाँ पर हमने फीते लगाए हैं। सबसे पहले तो जो लोग 4 ईयर साइकिल में विश्वास करते हैं और जिनको लगता है कि नवंबर 2021 में बिटकॉइन सडनली क्यों गिरने लगा, बेयर मार्केट क्यों शुरू हो गई, यकीन मानिए अगर यूक्रेन रशिया की वॉर नहीं होती
तो ये बिटकॉइन की महारैली चलती रहती। बिटकॉइन की इंडस्ट्रियल अडॉप्शन जस्ट शुरू ही हुई थी और अब मैं आपको इस विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर उस इंडस्ट्रियल अडॉप्शन के चलते बिटकॉइन $70,000 जा सकता है, जहां पर सिर्फ माइक्रो स्ट्रैटेजी और टेस्ला कंपनी ही बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व करती थी। इस बार चलो आप ये मुझे यूट्यूब बताइए लिंक पाठिয়েছে দেখো 2.5 लाख डॉलर क्यों नहीं ইউটিউবটা जाएंगे? দেখো লিংক कोई डिले हो পাঠিয়েছে गया है? না না उस समय भी अगर यूक्रेन रशिया की जंग सिर्फ फरवरी मार्च में रुक जाती तो बिटकॉइन एक और छलांग मारता, क्योंकि बाजार में चलो। पैसा बहुत ज्यादा था। दोस्तों हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ नेटेर डिस्क्रिप्शन में दिए स्पीड गए दरकार लिंक আরো से বেশি पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए। ল্যাপটপের কনফিগারেশন থাকা দরকার क्रूड বেশি ऑयल का बॉटम जो है नवंबर 2021 में हुआ, ओए इसी बे। के समानांतर बिटकॉइन का सीजन टॉप भी और नवंबर अपडेट होता 2021 में हुआ। कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का बॉटम रहना, क्रूड ऑयल का लिमिट में रहना ওইটাই बिटकॉइन চলছে के না प्राइस অন্য को চলছে काफी हेल्प करता है। और जैसे ही क्रूड की टेंशन स्टार्ट हुई, जैसे ही कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हुए, बिटकॉइन ने ऐसी पलटी मारी कि কি बिटकॉइन ने চালালে বে वापसी की। কি जो ये চালালে 130 মানে डॉलर का তুমি যেটা क्रूड ऑयल পাঠিয়েছো गया था, সেটাই তো उस दिन চালিয়েছি बिटकॉइन के কি प्राइस, চালাবো यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी माफी चाहता हूँ, जो मैं आपको राइट साइड पे चार्ट दिखा रहा हूँ वो बिटकॉइन का चार्ट नहीं है, बल्कि क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप है। अच्छी बात यह है कि हम सारे क्रिप्टो को लेकर चले, हम खाली बिटकॉइन की মোবাইলটা बात আমি क्यों করে करें? রাখিনি देखने को मिले তোমার कि 100 कच्चे तेल টাকা के दाम হয়ে जब ऊपर গেছে या नीचे जाते हैं, संपूर्ण क्रिप्टो मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। ঘুরে जैसे कि आप ঘুরে কাজ देखेंगे করছে जब আমার क्रूड ऑयल ফোনটাও का ভারী बॉटम হয়ে था গেছে तो वही बिटकॉइन का टॉप था। जैसे ही क्रूड ऑयल ने छलांग मारी, बिटकॉइन ने तेजी से गिरना शुरू कर दिया। पहला पड़ाव था मार्च 2022, जहां तक जाते जाते बिटकॉइन और क्रिप्टो की मार्केट कैप ने ऑलमोस्ट 40% डिप এটা लेते তো हुए অফ করলাম ऑलमोस्ट তাও হচ্ছে 1.2 ट्रिलियन गवा ভাই दिए। এখন 3 কি ट्रिलियन কেউ में से দেখছে 1.2 ट्रिलियन उसने गवा दिए और वो 1.8 ट्रिलियन तक आ गया। जैसे मैंने कहा, जंग रुकी नहीं, जंग फिर से जारी रही और जब से उसने दूसरा टॉप मारा এই কথা $121 पर बैरल, वहां पर हमने पूरी চলছে কিনা সেটা দেখা টেস্ট अच्छी बात চলছে यह এখন है সব कि जैसे জিনিস जैसे সব क्रूड गिरना ফোन शुरू हुआ, করতে হবে এইসবগুলো जून 2022 से जब क्रूड ने अगले एक साल में अपना बॉटम তোমার टच কথা किया, শুনে दैट वाज द मैसिव स्टार्ट ঘন্টা বলে ऑफ দেবো क्रिप्टोज महाबुल रैली। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि क्रूड কি রে ऑयल উপরে एंड बिटकॉइन क्रिप्टो हैज দেখো এটা বসে বসে দেখো उनका এখান থেকে গিয়ে দেখি समानुपात नहीं है बल्कि কি विपरीत হচ্ছে अनुपात है। अब चलिए बात करते हैं हाल ही की। इन बिटवीन अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर क्रूड ऑयल फिर से जंग के बाद बढ़ा है। इसका कारण हमने ग्रॉक से पूछा तो पता चला कि कुल मिलाकर सब जगह से ऑयल के ऊपर दबाव था, ऑयल की प्रोडक्शन कम हो गई थी। ओपेक देशों अक्सर वो जंग के बाद अपनी प्रोडक्शन कम कर देते ताकि उनको ज्यादा पैसा मिले और दुनिया भर में डिमांड भी बढ़ने लगी थी। इस कारण से कच्चा तेल जो है वो स्काई रॉकेट करने लगा। आई एम श्योर आपका सवाल आज के बारे में होगा। आज जब कच्चा तेल ऑलरेडी पिछले 4 हफ्तों में करीब 43% पंप कर चुका है, कच्चा तेल जो करीब $50 पर बैरल के आसपास सेटल हो गया था और खासकर क्रिप्टो विशेषज्ञों की बहुत उम्मीद थी कि हम उस ऐतिहासिक स्तर पर चले गए हैं जो रशिया की जंग के शुरू होने से पहले वाला स्तर था। एक बात तो क्लियर है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहां पर क्रूड ने बहुत समय बिताया था 2019-20 महाबुल रैली जो क्रिप्टो की आई थी वो वाला, वो अब हमें जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जंग होती है तब ये वाले प्राइसेस आते नहीं है। और मेरे हिसाब से बिटकॉइन $2.5 लाख जाने वाला था जब हम इस रेंज को हिट करते, जो कि कोविड वाली रेंज थी जहां पर क्रूड केवल $20 का रह गया था। अब ये वाले स्तर जो है ये सपने के ही स्तर रहेंगे। बट एनीवे अब हम थोड़ी सी स्पेकुलेशन लगाते हैं कि आगे आने वाले समय में क्रूड जो है वो कहां तक जा सकता है और ये भी समझेंगे कि ईरान का इसमें कितना बड़ा रोल है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो खुशखबरी ये है कि ईरान सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। टॉप 5 उत्पादकों में सऊदी अरेबिया 11 मिलियन बैरल पर डे, रशिया, कनाडा, चाइना और फिर यूएस आते हैं। चाइना का उत्पाद जो है वो करीब 5 मिलियन बैरल पर डे है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान 6 या 7 नंबर पे आता है, जो कि करीब 32 लाख बैरल यानी कि 3.2 मिलियन बैरल पर डे का उत्पाद करता है। किसी भी लिहाज से ईरान छोटा प्रोड्यूसर नहीं है, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर, बट उनके उत्पाद को रोकने से मेरे विचार से ग्लोबल क्रूड प्राइस को उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप मेरी ना माने तो ग्रॉक के हिसाब से जो काफी रिसर्च को फॉलो करता है, जून और जुलाई में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कच्चे तेल के जो दाम है वो एक्सपेक्टेड है कि वो मैक्सिमम करीब $80 पर बैरल तक जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इवन
ग्रॉक की डीप रिसर्च के हिसाब से ईरान का कच्चे तेल के दामों पर बढ़ने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कच्चे तेल के दाम ऑलरेडी 76 छू चुके हैं और मेरे विचार से 80 तक जाने में अब मार्केट ज्यादा पैनिक नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें काफी उम्मीदें हैं कि 17 सितंबर को फाइनली रेट कट होंगे। 18 सितंबर 2024 को रेट कट शुरू हुए थे, जिनकी 3 साइकिल दिसंबर 2024 में रुक गई थी और बुल मार्केट भी वहीं रुक गई थी। 17 सितंबर को रेट कट अगर शुरू होते हैं तो दैट विल स्टार्ट अनदर मैसिव बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन बुल रैली। अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी फेडरल रिजर्व से डिमांड की है कि वो इंटरेस्ट रेट को 1% पूरा 100 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करें, विच विल बी मैजिकल, क्योंकि इस समय क्रिप्टो एक्सपर्ट्स भी केवल 25 बेसिस पॉइंट या आधा परसेंट की उम्मीद ही कर रहे हैं। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ फुल 100 बेसिस पॉइंट रेट कट, और अगर 1% रेट कट हो जाता है तो दैट विल बी अमेजिंग फॉर द मार्केट। इसके साथ साथ स्टेबल कॉइन का मैजिक एक्ट और बहुत सारे अच्छी रेगुलेशंस मार्केट में आ रही है, जिनके चलते बिटकॉइन का प्राइस ना सिर्फ स्टेबल रहेगा बल्कि ऊपर भी जा सकता है। बट जो ऑल्ट कॉइन की महारैली है वो मेरे विचार से इंटरेस्ट रेट कट के साथ ही शुरू होगी, जो कि सितंबर 2025 में है। मार्केट शायद इसको थोड़ा सा प्री रन कर सकती है, हो सकता है कि सितंबर की जगह अगस्त में ही पंप शुरू हो जाए, बट उसके लिए आपको अभी निवेशित रहना पड़ेगा। आपके जो ऑल्ट कॉइन्स की बैग है उनको ऐसे करके रखना पड़ेगा। नया पैसा अगर डालना है तो बिटकॉइन में डालना है और ऑल्ट कॉइन्स को उनके इंसल्टिंग प्राइसेस पर ढूंढना है, जिसको मैंने CMRS मीम्स हमने नया चैनल बनाया है जिसमें डिटेल में कवर किया है कि आप कोई भी मीम चाहते हो कौन सी प्राइस पर खरीदे, कौन से पेपर बेचें, उसमें कवर किया गया। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको रातों रात अमीर बनना है स्टॉक मार्केट में तो ये वीडियो को स्क्रॉल कर दो, इसको मत देखो। बट अगर आपको सिस्टमैटिकली ट्रेड करना है सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। टॉप 5 उत्पादकों में सऊदी अरेबिया 11 मिलियन बैरल पर डे, रशिया, कनाडा, चाइना और फिर यूएस आते हैं। चाइना का उत्पाद जो है वो करीब 5 मिलियन बैरल पर डे है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान छठे या सातवें नंबर पे आता है, जो कि करीब 32 लाख बैरल यानी कि 3.2 मिलियन बैरल पर डे का उत्पाद करता है। किसी भी लिहाज से ईरान छोटा प्रोड्यूसर नहीं है, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर, बट उनके उत्पाद के रोकने से मेरे विचार से ग्लोबल क्रूड प्राइसेस को उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप मेरी ना माने तो ग्रॉक के हिसाब से, जो काफी रिसर्च को फॉलो करता है, जून और जुलाई में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कच्चे तेल के जो दाम है वो एक्सपेक्टेड है कि वो मैक्सिमम करीब करीब $80 पर बैरल तक जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इवन ग्रॉक की डीप रिसर्च के हिसाब से ईरान का कच्चे तेल के दामों पर बढ़ने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कच्चे तेल के दाम ऑलरेडी 76 छू चुके हैं और मेरे विचार से 80 तक जाने में अब मार्केट ज्यादा पैनिक नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें काफी उम्मीदें हैं कि 17 सितंबर को फाइनली रेट कट होंगे। 18 सितंबर 2024 को रेट कट शुरू हुए थे, जिनकी 3 साइकिल दिसंबर 2024 में रुक गई थी और बुल मार्केट भी वहीं रुक गई थी। 17 सितंबर को रेट कट अगर शुरू होते हैं तो दैट विल स्टार्ट अनदर मैसिव बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन बुल रैली। अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी फेडरल रिजर्व से डिमांड की है कि वो इंटरेस्ट रेट को 1% पूरा 100 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करें, विच विल बी मैजिकल, क्योंकि इस समय क्रिप्टो एक्सपर्ट्स भी केवल 25 बेसिस पॉइंट या आधा परसेंट की उम्मीद ही कर रहे हैं। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ फुल 100 बेसिस हो जाता है तो दैट विल बी अमेजिंग फॉर द मार्केट्स। इसके साथ साथ स्टेबल कॉइन का मैजिक एक्ट और बहुत सारे अच्छी रेगुलेशंस मार्केट में आ रहे हैं, जिनके चलते बिटकॉइन का प्राइस ना सिर्फ स्टेबल रहेगा बल्कि ऊपर भी जा सकता है। बट जो ऑल्ट कॉइन की महारैली है वो मेरे विचार से इंटरेस्ट रेट कट के साथ ही शुरू होगी, जो कि सितंबर 2025 में है। मार्केट शायद इसको थोड़ा सा प्री रन कर सकती है, हो सकता है कि सितंबर की जगह अगस्त में ही पंप शुरू हो जाए, बट उसके लिए आपको अभी निवेशित रहना पड़ेगा। आपके जो ऑल्ट कॉइन्स के बैग है उनको ऐसे करके रखना पड़ेगा। नया पैसा अगर डालना है तो बिटकॉइन में डालना है और ऑल्ट कॉइन्स को उनके इंसल्टिंग प्राइसेस पर ढूंढना है, जिसको मैंने CMRS मीम्स हमने नया चैनल बनाया है जिसमें डिटेल में कवर किया है कि आप कोई भी मीम चाहते हो कौन सी प्राइस पर खरीदे, कौन से पेपर बेचें, उसमें कवर किया गया। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
We have this Paul Tudor Jones clip. Let's watch this clip and then we'll discuss. But it would be some combination of probably gold, vol adjusted, Bitcoin, gold, stocks. That's probably your best portfolio to fight inflation. Vol adjusted, because the vol of Bitcoin's obviously 5 times that of gold, so you're gonna do it in different weights. You said at one point you would allocate 1 or 2% of your portfolio to Bitcoin. Is it still? Yeah, I think you just, particularly now that the roadmap is clear, then again, if I'm a policymaker, I'm going to run really low real rates. I'm going to have inflation running hot. क्या बिटकॉइन का प्राइस $95,000 की तरफ जा रहा है? इस सवाल का जवाब आपको कच्चे तेल से मिलेगा। कच्चा तेल जिसका दाम कुछ तेजी से बढ़ने लगा जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई। We continue to track the latest as far as the Iran. बिटकॉइन किसी इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री से compete नहीं कर रही है। बिटकॉइन कोई ऐसा नहीं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से compete कर रही है या ज्वेलरी इंडस्ट्री से compete कर रही है या सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री से compete कर रही है या वीजा या मास्टर कार्ड से compete कर रहा है, राइट? तो हमें कई बार ये लगता है कि जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि यार बिटकॉइन को इस इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्री का एक तो लिमिटेड साइज होता है, नंबर वन। और दूसरी चीज ये है कि वो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री का मतलब है कि पर्टिकुलर जो एक गुड्स और सर्विसेज की एक इंडस्ट्री होती है, राइट? और सपोज ऑटोमोबाइल है या बैंकिंग है या पेमेंट्स हैं या लोन है या इंश्योरेंस है, ये इंडस्ट्रीज है, एफएमसीजी है, ठीक है? बिटकॉइन किसी इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री से compete नहीं कर रही है। बिटकॉइन कोई ऐसा नहीं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से compete कर रही है। को इस इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्री का एक तो लिमिटेड साइज होता है, नंबर वन। और दूसरी चीज ये है कि वो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री का मतलब है कि पर्टिकुलर जो एक गुड्स और सर्विसेज की एक इंडस्ट्री होती है, राइट? और सपोज ऑटोमोबाइल है या बैंकिंग है या पेमेंट्स हैं या लोन है या इंश्योरेंस है, ये इंडस्ट्रीज है, एफएमसीजी है, ठीक है? बिटकॉइन किसी इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री से compete नहीं कर रही है। बिटकॉइन कोई ऐसा नहीं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से compete कर रही है या ज्वेलरी इंडस्ट्री से compete कर रही है या सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री से compete कर रही है या वीजा या मास्टर कार्ड से compete कर रहा है, राइट? तो हमें कई बार ये लगता है कि जब हम
कंपटीशन की बात करते हैं तो हम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि यार बिटकॉइन को इस इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्री का एक तो लिमिटेड साइज होता है, नंबर वन। और दूसरी चीज ये है कि वो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री का मतलब है कि पर्टिकुलर I'm delighted to see everybody here today. And the number one reason I'm delighted is because this speech is for you. I have traveled the world and I've spoken about Bitcoin, and I've told countries why they needed Bitcoin, and I've told institutional investors why they needed Bitcoin. And I've told boardrooms and companies and CEOs why they need Bitcoin. And I've spoken to the disembodied spirits about why our children's children need Bitcoin. But my presentation today is directed at the 8 billion people on the planet. It's the 21 ways to wealth for every individual, every family, every small business, every entrepreneur. Is not for the billion-dollar public companies, it's for everybody. And I focused for quite a while on that. So this is for you. The 21 ways to wealth. The first way to wealth, clarity. Clarity is the topic. And that clarity of mind comes when you realize that Bitcoin is capital, perfected capital, programmable capital, incorruptible capital. The significance of that is every smart person, every thoughtful individual everywhere in the world is going to want perfected capital. Every one of your enemies is going to want incorruptible capital, and all of the AIs are going to want programmable capital. The demand for this is huge. What's it worth?
It's worth half of everything. Half of everything. The second way to wealth, conviction. It starts with the observation that Bitcoin is going to appreciate faster than every other asset because it is engineered to outperform. It's going to grow faster than the S&P. It's going to appreciate faster than gold. Sorry, Peter. I should say that again. It's going to go faster than gold. Sorry, Peter. It's going to grow faster than real estate or collectibles or anything else you can imagine because it was engineered that way. And that leads us to our third way to wealth. If you're going to generate wealth, if you're going to get rich on Bitcoin, you're going to need courage. And courage means wealth favors those who embrace intelligent monetary risk. Satoshi started a fire in cyberspace. And while the fearful run from it and fools dance around it, the faithful feed the flame, dreaming of a better world bathed in the warm glow of cyberlight. What does that mean? It means that a lot of people that look at Bitcoin are going to be afraid of it. They'll never touch it. They'll never benefit from it. They'll be left behind. Then others will just juggle it. They will juggle the fire. They will make fireworks with the fire. They will create trinkets with the fire. They will create magic tricks with the fire. But those that truly understand it will feed the fire. How do you feed the fire? You feed the fire by buying the Bitcoin. Buy it, take your fiat currency, trade it for Bitcoin. Take your long-term capital, trade it for Bitcoin. Sell your bonds, trade for Bitcoin. Sell your inferior equity, sell your inferior real estate property, buy Bitcoin. Feed the fire. And what will come of that? An extraordinary explosion in the network, in the power of the network, and you will have bought your ticket to prosperity. The fourth way to wealth is cooperation. And this is very important. You're more powerful not as an individual, but with the support of your family, with your family aligned around this. If you understand Bitcoin, you can act as an individual, but when your entire family understands Bitcoin, you're much more powerful. Your parents, they have credit, they have capital. You have capability, you have conviction, you may have courage. Your children, they have time, they have potential. Your 80-year-old grandfather can draw down capital from an IRA, can borrow money from a bank,
has a portfolio, the secret is transfer that capital into the hands of the child. The child's got 80 years ahead of them, right? When you think in terms of how do I actually transfer money, transfer capital from the past and turn it into money for the future, it's a generational thing. So think about the family. Families that work together are extraordinarily powerful on this journey. बहुत सारे ट्रेडर्स दिन भर स्क्रीन देखते रहते हैं, चार्ट्स देखते रहते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, और उसके बाद कुछ रिटर्न्स कमा पाते हैं। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं एक सिंपल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी The fifth way to wealth in this day and age is capability. And here I could list all sorts of technologies for you to master, and I thought about it. But at the end of the day, the overarching compelling observation is you need to master artificial intelligence if you would be wealthy. When in this day and age, in the year 2025, you have at your fingertips an array of accountants. You have a group of lawyers. You have a set of professors, historians. You have at your fingertips all the collective wisdom of every great entrepreneur. You have everything that I know, everything that any other CE knows. All you have to do is go to the AI, put it in deep think mode, plug in all of your circumstances, all of your hopes, all your aspirations, all of your problems, and then start to query it and then engage with it. I tell all my executives, before you ask a lawyer, before you ask a banker, before you ask any expert, go to the AI, ask the AI, make it think. Grind the silicon overlord. Okay, this is very important because many of the suggestions I'll give you next, they were out of the reach of the working man. They were out of the reach of the middle class. You could say, yeah, those sophisticated trusts or those sophisticated legal constructs, that's great, but I don't have the money for that. I can't afford to spend hundreds of thousands of dollars on lawyers. And let me tell you a secret. I have dozens of lawyers that work for me. Thousands of lawyers I've employed, spent hundreds of millions of dollars on lawyers. The first thing I do when I have a question is I go and ask the AI. After I do that, it tells me no. I ask a different way. I threaten it. I ask it to give me a solution. I find a 95% solution. I find the solution. And then I take that solution. I send the link to my management team and my lawyers, and I say, look, I solved the problem. This is what I want to do. Give me your execution plan. And then I give them anywhere from 2 to 5 days. If you're feeling charitable, give them 5 days. If you're in a hurry, give them 2 days.
if your financial advisors, if your accountants, if your lawyers, if your executives can't, if anybody, your friends, your family, if they can't figure it out in 2 to 4 days, they're going to get exited from the gene pool. Change the lawyer. Change the whatever. If someone said, I can't use the telephone, I can't figure out the web link, you sent me a book, but I can't read, you would find someone else to work with. This is very important. You know, the path to wealth is through capability, but 2025 is the year where every one of you became not a super genius. Every one of you is collectively 100 super geniuses that have read everything the human race has published. If you have the humility to ask for help from the AI, don't put your ego first, put your interest first. Your family will thank you in years to come. The sixth way to wealth is composition. Construct. I mean that you can go and borrow money against your 401k, and maybe you can make an investment in an IRA, and maybe you can construct an efficient insurance policy. Perhaps you're going to want to put together a dynasty trust in Florida that's good for 300 years, but you may find that you want the timeless dynasty trust out of South Dakota that lasts forever. The normal reaction would be, I don't know how to do any of this. But my observation today is, ask the AI, figure it out, because
to be an individual, right? There is no shame in being a company of one or a company of a family. I would think about what is your path. If you look at the hierarchy of the world and you're ranking it, the individual is at the bottom of the hierarchy. The family is more powerful. The partnership is more powerful still. The small, mid-sized private business is more powerful still. The large private company is next. The small public company on an OTC market is next. Then a public company on a large capital market, then a public company on NASDAQ or New York Stock Exchange. Then there's the seasoned issuer in the US capital markets. And at the very top of the pyramid is the well-known seasoned issuer in the US capital markets. There's a few hundred of them in the world. What can you do when you crawl to the top of that pyramid? You can file a registration statement and sell $1 billion of securities in 6 hours. That's what you can do. I want that for each one of you. I want you to reach your full potential. And incorporation is a start to that. And now, can you give me slide 10? My clicker is jammed. Thank you. The 10th way to wealth is through focus. Just because you can do a thing doesn't mean that you should. I have done lots of things. I am 60 years old. One of the reasons that I have embraced Bitcoin with the religious passion and the ideological fervor that I have is because I had the opportunity to do things in my 20s and my 30s and my 40s and my 50s. You know, and what you find is that it's very challenging to change the world operationally. Most of my great ideas I thought were infallible, but it turned out that they didn't work out the way I thought they would. In fact, if you invent a new product, a new service, a new whatever, there's a 90% chance over 5 years it'll fail. If you invest in Bitcoin on your balance sheet, there's a 90% chance over 5 years it'll succeed. As I push out right? Keep in mind that the property company, the company that owns the Bitcoin, is looking at a 30 to 60% AR every year. You're growing 30, 40, 50%. Just because you can't do it at my 30s. Think about every operational business, your restaurant, your hotel, your chance over 5 years, it'll succeed. Of the year, and as I push out the business 30% every year for the next 20 years, it's been done by 7 companies. We call them the Magnificent Seven. There's 400 million to try. So in this particular case, make sure that when you come up with a strategy, focus on it. You know, don't get distracted. The 11th way to wealth is through equity. Right? What does that mean? It means share your opportunity with investors willing to share your risk. Right? A company can do this. An individual cannot do this. Metaplanet is done. Metaplanet went from 10 million to a $5 billion market cap. It was a partnership with their equity investors. Without their equity investors, they're nothing. My company went from $1 billion enterprise to a $100 billion enterprise with the help of our equity investors. What are you doing? Right? You have the company, you have the strategy, you offer them the opportunity. Right? What you're really, if you're a dentist and you make $200,000 a year in cash flow, you can buy 200,000 of Bitcoin every year for 20 years. And that's not a bad idea. You'll be the richest dentist on your block. But you can incorporate the dental practice, get it valued at 5 times cash flow, get $1 million value, sell 33% of it
for $500,000. Take the $500,000, invest in Bitcoin today, wait a year, raise another $500,000 at a double market cap, 2, 3, 4 times NAV, invest that, wait another year, raise $3 million, invest that, you'll be the first billionaire dentist on your block. And what did you do differently? एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए अपने 10 गुना करना एक ड्रीम होता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा एंट्री पॉइंट अगर आपने ढूंढ लिया तो आपका पैसा 10x हो सकता है। और ये डेटा बैक टेस्टेड है, यानी कि आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हो 2021, 2022, 2023, 2024 में लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। बट आपको पता है आप अच्छे टोकन क्यों फाइंड नहीं कर पाते हो? क्योंकि एक आम इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तब वो टोकन ऑलरेडी ग्रोथ दे चुका होता है और आप कभी भी बॉटम के आसपास टोकन को फाइंड नहीं कर पाते। बट वॉडिफाई इससे अच्छी स्ट्रेटजी के दम पे, अच्छे टेकलिस्ट के दम पे, कुछ बैकएंड के डेटा को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप के टोकन ग्रोथ दे सकते हैं, किस टाइप के टोकन ग्रोथ नहीं दे सकते। अगर आप ये चीज एंड पूरा क्रिप्टो मार्केट को समझना चाहते हो A to Z ऑन फंडामेंटल बेसिस, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे वर्कशॉप में, जहाँ पे मैं आपको सेम चीज सिखाऊंगा। हाय, आई एम जीत शाह। आज से 7 साल पहले मैंने जब क्रिप्टो में मेरी जर्नी चालू करी तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मैं भी रैंडमली टोकन चूज कर लेता था और मैंने हर बार लॉस किया। और उसके बाद मैंने चीजें समझी, सीखी और मुझे समझ आया कि अगर आप कुछ स्ट्रेटजीज यूज करोगे, पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से बनाना सीख लोगे, अच्छे टाइम पे बाइंग करोगे, अच्छे टाइम पे सेलिंग करोगे, वेल्स के वॉलेट को ट्रैक करोगे, HNIs को फॉलो करोगे, तो आप हमेशा पैसा कमा सकते हो। एंड आई हैव बिल्ड 7 करोड़ ऑफ पोर्टफोलियो और मैंने 25 साल की एज में क्रिप्टो में 8 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्डअप किया है। एंड मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो सारी स्ट्रेटजीज जो मैंने पर्सनली यूज की है, जिसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो एंड जिसको सीख के समझ के आप इस मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो आप सीखना चाहते हो कि You partnered with someone else and you cut them in, right? That's what Strategy's done. That's what Metapun has done. That's what Similar is doing. You can do it. The 12th way to wealth is through credit. What does that mean? It means there are a lot of people in the world that are afraid of the future. There are a lot of people that want to protect their money or they want a small yield. And corporate bonds yield 50 basis points. In the US, investment grade bonds yield 500 basis points. When you as a corporation give creditors certainty, you give them a fixed coupon, you give them a fixed dividend, and you give them seniority in your capital structure, you turn that risk into yield. You're giving them certainty, security, yield, and what you're getting back is the capital. The world's full of people. I'm a retiree. I want a guaranteed 8%. I don't want to lose my money. If you give them that proposition, you're going to get the money, and it's going to compound at 30 to 60%. The worst case is you're capturing the 22% spread, but it's compounding up with all the capital up front. And so credit sometimes is a bad word, but at the end of the day, you as the individual creating a company can create credit. If I want to be the billionaire dentist on the block, I incorporate, I sell some equity, I sell some of my future, I get the stock up, and then I go borrow some money or I sell a preferred stock or some instrument to someone that wants less risk, less return, more certainty, and I rock back and forth. And the goal is not to take $200,000 of cash flow a year or $50,000 of cash flow a year and invest over 20 years. The goal is to accelerate 100 times as much money through proper financing on my corporate entity now and invest it in the world's greatest asset, which is Bitcoin.
here we have 13, way 13. 13 is not always a happy number. I use the word compliance. You should create the best company you can create within the rules of your market. Every market is different. But think about this. Public companies have special rights. They can issue equity and debt. Trust companies have other special rights.